is basically UX UI, right? So But UX I UI. was more interested towards the marketing side of the fashion. Marketing. So what is specifically, then why not MBA? Because fashion marketing and MBA MFM में जो marketing सिखाते, there's not much difference. Then why MBA, specifically? ma'am, MBA is a generic course, like it covers all of these things, and I wanted a course which is focused on fashion and its management aspects, mainly on fashion. Do you have any inspiration where inspiration, what is your brand to look for, and who is your inspiration? Like, are you inspired by someone, or someone have guided you? How did you came across the course? No, not like that. I just came, मतलब आ गया था खुद से. I just read about it. ठीक है. वंशिता, थोड़ा सा इसको लिखोगे आप तो और इम्प्रोवाइज कर पाएंगे अपन. बट ठीक है. Now I want you to do. Okay, hi Shruti. Hi ma'am. So my bachelor's degree is already from B Design. I've completed my bachelor's in B Design in fashion and apparel. So I've already learned about the design aspects of fashion. Now I wanted to improvise my managerial ability in the field of management, also my leadership in fashion. So that is the reason I wanted to do Master's Fashion Management. Is that okay? No, it can be more elaborative. It is very not. It is okay. It is not. It's not that you cannot say this. You cannot articulate like this, but it can be better. Because MFM managerial skills के लिए ही आ रहा है, और ये answer हर जगह है. This is everywhere, right? Wherever you see that why MFM, it helps you to become a better manager and all, right? Yeah. And have you worked in between after your undergraduation? Yes, ma'am. I also interned as a fashion stylist. I worked for a brand called Lella from Mumbai, and I worked as a fashion consultant for a startup brand. So, can you incorporate few points from the experience that you've gained while doing internships? Yes, ma'am. I can do that. Yeah. Would really suggest that you should do that, because ऐसा नहीं होता ना, ऐसे रात को सो रहे डिजाइनर की तरह, सुबह उठ रहे मैनेजर की तरह, राइट? There has to be some click कि अच्छा ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ, right? This is something which I can be good at. Yeah. No? So you should incorporate that, because that gives a personal touch. Otherwise, it looks very subjective. Cool? Okay. Yes. Well, I would expect a video from you, Shruti, too. Yes. Okay. Video is something that the more you do, the more better you become, the more it get polished. The way you will articulate. And जैसे सर बोल रहे थे भाई, सो के उठ के भी मुंह से वही निकलना चाहिए जो आप चाहते हो. ऐसे यहाँ पर एक अलग फाइट नहीं चलना चाहिए. Okay, so today we will go back to retail. Retail में we have discussed merchandiser, we have discussed buyer, we have discussed marketing person more or less, thoda bahut, right? Not too much. We have discussed how they function, what all are their role, how do they plan, how do they execute things. Obviously, there's a lot of plus minus. There's a lot of retail math too. Retail math is very different than what we do, what we have studied. But उसी के लिए, just to see whether you guys can do retail math, इसीलिए आपके जो entrance exam में percentage, simplifications, ऐसे questions आते हैं. Just to let you know, right? So ऐसा लगे ना कि यार हमें क्यों पढ़ा रहे 8th क्लास की मैथ्स. वो जो मैथ्स है, वो जो एप्टीट्यूड है, उसको मैथ्स नहीं बोलूंगी मैं. एप्टीट्यूड जो है वो एग्जीक्यूट करना आपको रिटेल में, मर्चेंडाइजिंग में, एक्सपोर्ट में, हर जगह करना पड़ता है. इसीलिए वो आपके एंट्रेंस में होता है. सो एक रोल होता है विजुअल मर्चेंडाइजर. विजुअल मर्चेंडाइजर अगर किसी स्टूडेंट ने अंडर ग्रेजुएशन फैशन कम्युनिकेशन से करा है तो वो कई बार विजुअल मर्चेंडाइजर बनता है. द अदर रोल्स आर दैट जो क्वालिफिकेशन रहता है वो मास्टर्स भी रहता है. एंड इट कैन बी ईदर एमएफएम और एम डिजाइन. मोस्टली एम डिजाइन के स्टूडेंट्स आते हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ ओवरसीज अपॉर्चुनिटी टू इन विजुअल मर्चेंडाइजिंग, नॉट जस्ट national. So landmark Dubai aata hai in NIFT, which who hire people for the respective role, visual merchandising, store management sort of.
So MFM के students for sure वो लेकर जाता है. Your placements, I am very much assuming you guys know that your placement is centralized placement. There's no campus specific placement. Are you guys aware of that, of NIFT? Yes, no? No, ma'am. Okay, ठीक है. We will discuss further, but छोटा सा समझ लो that centralized placement होता है. Companies आती हैं एक campus में, 2, 3, 4 campus में आती हैं. जो भी रिस्पेक्टिव लोकेशन की कंपनी होती है वो उस रिस्पेक्टिव सेंटर आती है. नॉट नेसेसरली ऑल कंपनीज विल द सेम कंपनी विल कम टू ऑल द कैंपस, यू नो. तो मुंबई की कंपनी मुंबई कैंपस आएगी, बैंगलोर की कंपनी बैंगलोर कैंपस आएगी. स्नेहा, आर यू नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी? सो एंड दिल्ली की कंपनी, दिल्ली के जो कंपनीज होंगी वो दिल्ली कैंपस आएंगी. हैदराबाद, गांधीनगर, इधर भी एक कंपनीज आती है टेक्सटाइल रिलेटेड. सो या दैट्स हाउ इट वर्क. सो वहां पर जब कंपनीज आती हैं तो वो लोग विजुअल मर्चेंडाइजर के लिए हायर करते हैं. जो मैंने आपको बताया लैंडमार्क स्पेसिफिकली जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग है स्टोर मैनेजमेंट के लिए आती है, वो एक कैंपस में आएगी, वो 2-3 बच्चे शॉर्टलिस्ट करके चली जाएगी. बट मैक्सिमम पैकेज उसी का रहता है. लाइक पैकेज इज अराउंड 40 to 16 लाख. मेरे टाइम पे इतना था. आई एम अज्यूमिंग दैट इट माइट हैव गॉन अप बाय नाउ. सो या दैट इज वन जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट. And now visual merchandiser. Anyone is aware of what visual merchandiser does? Like, have you read it somewhere? कहीं कुछ देखा है ऐसे relevant? Designing of the store, like choosing the appropriate colors and everything, the clothes, to make it look visually attractive. Yeah. Very good, Amisha. So yeah, visual merchandiser is someone who is selling the goods through visualization. They will incorporate, they will be the one जो आपका स्टोर का जो फील है, जो आपको एक वाइब आ रहा है शॉपिंग करने का. विंडो शॉपिंग हम कई बार करने जाते हैं, then we end up buying. So placement of goods, there are a lot of सबकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से स्टोर डिजाइन करा है ताकि आप परचेज करो. सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस अबाउट अ स्टोर इज द विंडो. जो विंडो होता है, राइट, विंडो मीन्स जो एंट्रेंस होता है, वहां पर एक डमी होता है, एक स्टोरी चल रही होती है, अगर वैलिड थीमेटिक होता है बहुत ज्यादा, राइट, तो वो प्लान करना. उसके बाद when you're buying something, right, when you're going to the billing counter, you see a lot of small stuff like hair pins, handkerchief, perfumes, right? So वो छोटा segment for 500, 200, 100 rupees ऐसा छोटा चीजें रखी होती है. तो ये सब कुछ एक everything is planned by visual merchandiser. So अब मैं वापस एकदम बेसिक पे जाती हूँ. विजुअल मर्चेंडाइजर पहले तो उसको एक स्टोर का लेआउट दे देते हैं. Think yourself like you have to design a place. Store दे दिया उन्होंने. Now he has to think like a consumer. Okay, what should be the color scheme? What is the brand language? And what should be the color scheme? What should be the call outs? Signages क्या होने चाहिए? Up to 50% off, buy 2 get 1, buy 1 get 1, or how should be the signages, और कहाँ पर किस चीज का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? Getting it like kids section कहाँ होना चाहिए, ट्रायल रूम कहाँ होना चाहिए. आप जब भी नोटिस करोगे जो भी अच्छी ब्रांड्स है, बड़ी ब्रांड्स है, वहां पर ट्रायल रूम एकदम एंड पे होता है. एंड पे इसलिए होता है that even if you don't want to, obviously if you have come inside to a store to make a purchase, you will purchase something, you will try it on too. So आप ट्राई करने के लिए लास्ट में जाओ, और जब आप लास्ट में जाओ तब सारा असॉर्टमेंट देखते हुए जाओ. आपने किसी शॉप में देखा है सबसे पहले उन्होंने बिलिंग काउंटर रख दिया, या सबसे पहले एकदम एंटर करते ही उन्होंने, बड़े स्टोर की बात कर रही हूँ मैं, 500-700 स्क्वायर फीट के स्टोर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब मोर देन मे बी 1500 स्क्वायर फुट, उतना बड़े स्टोर की. वहां पर व्हेन यू एंटर यू विल सी फैशन, मतलब फास्ट फैशन वाले कपड़े, एंड देन क्लासिक पीछे होता है जहाँ पर ट्रायल रूम है, वहां पर आपके क्लासिक गारमेंट्स होते हैं मोस्टली. Your spaghetti, your white t-shirt, your black t-shirt, your trousers. कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हो किसी ब्रांड का स्टोर, क्लोथिंग ब्रांड का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. उसमें कैसे साइनेजेस हैं, हाउ आर दे गिविंग यू डायरेक्शन, आगे जाओ, आगे किड्स का रखा है, मदर के पास, मतलब वुमेन्स के पास किड्स का होता है. अगर वो किड्स के, क्योंकि who make the purchase for kids? Women themselves, right?
So when they're buying something for their kid, they might end up buying something for themselves too, when it is just beside each other. The section is close to each other. So this is what people plan while doing the research. So ट्रायल रूम लास्ट में होगा, ऐसे होगा, कैसी कलर थीम होगी, कितने हाउ विल बी द लुक एंड फील, कैसा फ्रेग्रेंस होगा, मतलब अरोमा कैसा आ रहा होगा, कैसा म्यूजिक चल रहा होगा, राइट. लॉट ऑफ स्टोर्स यू गो, राइट, आपको आवाज आती है, म्यूजिक आता है, राइट. तो वो सब चीजें एक विजुअल मर्चेंडाइजर प्लान करेगा, एंड देन एवरीथिंग हेल्प्स यू टू मेक अ परचेज. अगर इफ यू फाइंडिंग समथिंग वेरी प्लीजिंग, राइट, आपको मजा आ रहा है, सिस्टम जो है इतना सिस्टमैटिक है कि आपको ट्राई करने में कोई इशू नहीं आ रहा, तो यू एंड अप बाइंग मोर समटाइम्स. does that happen or not, right? तो विजुअल मर्चेंडाइजर वो करता है. सो वो देखने में एक क्रिएटिविटी चाहिए होती है, एक सेंस चाहिए होता है, और डेटा की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. हो सकता है मेरे को रेड के साथ व्हाइट, रेड अपर है, व्हाइट बॉटम है, मेरे को लगा के सुंदर लग रहा है, बट पीपल आर नॉट बाइंग इट बिकॉज दैट इज वेरी सीजन स्पेसिफिक. सो वो डेटा जो भी है, उन्होंने जो भी एग्जीक्यूट करा है क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको करने से कितना फर्क पड़ा है, उस पे फर्क मतलब वो करते हैं. क्या बायर का थॉट प्रोसेस है, लाइक बायर के दिमाग में क्या चला कि क्या चीज पुश करनी है, कौन सा गारमेंट पुश करना है, वो विजुअल मर्चेंडाइजर को बताएगा. फिर वो उसके साथ ग्रुपिंग करेगा, उसको डमी में लगाएगा, उसकी विजिबिलिटी ज्यादा करेगा, उस एसकेयू को आगे रखेगा. यू गेटिंग. सो this all planning is done by a visual merchandiser, and both of you can be the one. And yeah, that's it. I think this is it. So anything else that you think that कुछ समझ नहीं आया? या मतलब मैं MFM और MDES दोनों विजुअल मर्चेंडाइजर कर सकता हूं? दोनों ठीक है. Cool. So visual merchandiser, again, you have to good with your creativity skills. You have to good with analytical skill again, because you will read data. You have a good communication skill. You will be interacting with consumers and the floor staff, retail staff, fashion consultants जितने होते हैं जो guide करते हैं, उनसे आपको बात करना है, उनसे feedback लेना है, right? And there are a lot of brands who will push you, even if they'll hire you, if you're a fresher, they will hire you for any specific position. They will push you to stand and observe the consumer of that respective brand, जो purchase बना रहा है, क्या उसका behavior है, उस behavior के हिसाब से क्या चीज better incorporate हो सकती है. So next time whenever you guys are going, in a mall, please visit 2-3 stores and see that what is the difference, what is their language, how are they doing it, what is that is motivating you or encouraging you to make a purchase, right? उसका मतलब visual merchandiser is a good person, मतलब उसने सही job करा. सबसे पहले, how many of you have visited Miniso initially when it was launched? Miniso का store. Many times. Have you guys visited? So वहाँ पर अब देखते हो बड़ा opposite है. बिलिंग काउंटर स्टार्टिंग में पहले बड़ा स्टार्टिंग में था, बहुत क्राउडेड लगता था, कई बार तो यू डोंट विश टू एंटर द स्टोर बिकॉज इट लुक्स सो क्राउडेड. बट आफ्टर अ व्हाइल दे हैव चेंज्ड देयर स्ट्रेटजी. अब बिलिंग काउंटर पीछे है, उन्होंने फ्रेग्रेंस आगे रख दिया है, एंड जो छोटे आर्टिकल्स है वो पीछे रखे हैं. गेटिंग इट? सो ये चेंज बहुत सटल होता है हर ब्रांड में, बट बहुत सारे ब्रांड इसको बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत सारे ऑफर कॉल आउट्स लगा के बहुत फर्क पड़ता है. सो वो सारी चीजें आप इनकॉर्पोरेट करना. अब थोड़ा सा मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में बता देती हूँ आपको. यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू वर्क इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री? ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स? Ma'am, if we say visual merchandiser, then they will ask, why do you choose MFM? Why didn't you choose MDES? Will they ask like that? You will not say that I want to be visual. You want to work in store, right? Which course have you selected? MFM. MFM. And what are your aspiration? Like, why do you want to do MFM? Like, what was your thought process when you were filling the form, and why you have applied for it? Actually, I thought I'm from a BCom background. So I was like, I had a keen interest in fashion. So
So I want to learn about the management side of the business, of fashion business. So I chose MFM. So that is relevant to you. They will not ask you why not M design, because M design is something that will not add on value. You might have to start a lot of things from zero. When you are doing MFM, right, it is management. You already have studied a little bit of management already. There are a lot of subjects like statistics hota hai, finance hota hai, economics hota hai. You already have studied it, right? So it will be cherry on the cake. You will be having that exposure and that understanding of that respective course, and you'll be moving to different field. So आपको इस courses में थोड़ा कम effort लगाना पड़ेगा, और maybe बाकी courses में you will have more time to invest and understand and learn about it. So that is something that you can take your answer to. Okay. Thank you, ma'am. They will, for you it is, MFM is very relevant. There's no way that they can crack or they can continue for. There can be a follow-up question for you if you say that you want to be a visual merchandiser or something like that, like want to take care of storefront or maybe offline store. Yeah. Ma'am, So, I'm also from commerce background. I have done my bachelor's in commerce, but I you want want to apply for M design. M design because it's my interest was in design to the creative side of the industry. But what is the story that you are building during your? I've not built a proper story, like I've not yet built the proper story for them. Like थोड़ा सा, but you need to work on it, because again आपके लिए question आएगा why not MFM? MFM. Because again वो आपके लिए बहुत relevant course था, right? It is a continuation of what you were doing already. And why not? They will ask. So be ready for it. But prepare कर लो. We will help you to how to articulate it and what all to put in. ठीक है. So it's already half an hour. हम लोग अब e-commerce के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. अमरनाथ, गायत्री, आपने करा? Have you done something? Yes, ma'am. I made wrote some key points, and I have to